Hello everyone. So today we are here for Ailet paper analysis. Ailet 2024 analysis. आईलेट का एग्ज़ाम आपका अभी 10th को हुआ है, 10th दिसंबर को, एंड वी आर हेयर टू डिस्कस द पेपर. कल ही आपका पेपर हुआ है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग दैट. तो सबसे पहले तो मैं आपको पहले पेपर दिखाऊंगी, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू इन केस आई फेल्ट देयर वाज एनी चेंजेस. सो इफ़ वी टॉक ऑफ द लेवल ऑफ द पेपर, आई वुड से इट वॉज प्रिटी मच सिमिलर टू लास्ट ईयर. कोई ज़्यादा उन्होंने डिफरेंस नहीं आया इन द लेवल ऑफ पेपर. डिफिकल्टी लेवल मोर और लेस सिमिलर था. हाँ, there was one change that you could notice. पहले let's see what is Ailet paper about. Your Ailet paper, as you know, consists of 150 questions, जिसमें आपके आते हैं 70 questions logical reasoning के, then you have 50 questions English, and then you have 30 questions of GK. Okay, this is the pattern that is there for the Ailet exam. And if we talk of this year, pattern तो same ही था, but the difference that was observed was कि English and logical के पेपर जो sections आता है that comes combined. एक बड़ा passage आ गया, then you'll get some questions of English and then some questions of logical reasoning. Then you have next passage and then again वही चलता रहता है. तो ये दोनों sections combined आते हैं, but इस साल बिल्कुल separate आए थे. So you had English section, then you had GK section, and then you had your logical reasoning section. Okay. Logical reasoning also includes legal reasoning, and there is no clear-cut demarcation that how many questions you are going to get from legal. That is totally their call. They may or may not give any question. तो अगर इस साल की भी बात करूं, so out of 70 questions, 9 questions आपके legal के थे, बाकी आपके 61 questions logical के थे. legal मतलब law के questions थे. alright. so अगर basic analysis हम देखें, I'll start with the smallest section, GK. पेपर आपका बिल्कुल डायरेक्ट आया था GK का. Let me open the paper for you. So this is your paper, and if I talk of, आपका पेपर स्टार्ट हुआ इंग्लिश के सेक्शन से, and then when we move to GK section, you will find that the questions are very direct. जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following countries is not a member of SAARC? डायरेक्ट. SAARC एक हमारी साउथ एशियन एसोसिएशन है ऑफ रीजनल कोऑपरेशन. दैट इज़ अ बॉडी फॉर कोऑपरेशन इन साउथ एशियन रीजन. तो साउथ एशियन रीजन की कंट्रीज इसका पार्ट है. अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, हम सब इसका पार्ट है, बट कंबोडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट. तो सिंपल आपका क्वेश्चन, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आया. देन यू हैव अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, कि किस बॉडी का पार्ट रहे हैं. ठीक है. सो यू गॉट क्वेश्चंस विच वर डायरेक्ट. आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं थे. ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे आपके डायरेक्ट थे. ओके. एंड अगर हम इसमें भी फर्दर डिस्टिंक्शन देखें, लाइक विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, अगेन स्टैटिक जीके. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चंस. तो अगर इसमें भी हम डिस्टिंक्शन देखें, सो यू विल सी दैट इन जीके सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के थे एंड 25 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके के थे. ऑलराइट. 25 फ्रॉम करंट सेक्शन एंड 5 फ्रॉम करंट सेक्शन एंड 25 फ्रॉम स्टैटिक जीके. बट स्टैटिक जीके ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू शुड नॉट जस्ट प्रिपेयर ब्लाइंडली. स्टैटिक जीके भी यूजुअली जो करंट में बात चल रही होती है उससे कहीं ना कहीं पिक करते हैं. तो करंट हम पढ़ते ही हैं, साथ में आपको करंट का स्टैटिक पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल G20 के कुछ क्वेश्चन थे, बट G20 के बेसिक्स, G20 कब फॉर्म हुआ, किसने फॉर्म करा, कौन कंट्रीज उसके अंदर है, उसका लेटेस्ट समिट कहाँ हुआ है, नेक्स्ट कहाँ होने वाला है. यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ इट. ओके. किसने ज्वाइन करा, किसने एग्जिट करा, आपको सब कुछ पता होना चाहिए. तो उसी से स्टैटिक क्वेश्चन बन के आ जाता है. तो करंट इज इंपॉर्टेंट. 2 सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं.
बट स्टैटिक भी इसी कारण से आपका आता है. सो अगर हम पेपर देखें, यू विल सी मेजरली आपके क्वेश्चंस स्टैटिक के ही थे. दैट इज सस्टेनेबल SDGs हमारे होते हैं, तो ये किससे रिलेटेड है. GDP का आपका क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चंस हैं, COP 26, COP हमारे होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, राइट. जनपीत अवार्ड, ऑल दीज थिंग्स. सो डायरेक्ट क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस वर देयर. सो ये थी आपकी बात उसकी. देयर वर नो सरप्राइजेस इन दिस सेक्शन एंड आपका योर GK पार्ट वाज एज इट इज यूजुअली आस्क्ड. देन इफ यू मूव टू इंग्लिश, देन आपका पेपर था मेजरली, आपका मतलब पेपर था 100% पैसेज रिलेटेड, पैसेज बेस्ड पेपर था. योर एंटायर पेपर हैड ओनली पैसेजेस. ठीक है. सो दिस इज योर फर्स्ट पैसेज रिलेटेड टू VR, वर्चुअल रियलिटी. एंड इन दैट इटसेल्फ दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस, कुछ वो कैप के क्वेश्चंस भी आए हैं. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इस फ्रेज का क्या मीनिंग है, एंड ऑब्वियसली आपके एनालिटिकल स्किल्स को भी चेक करा है. सो आपके इंग्लिश के पूरे सेक्शन में ओनली पैसेजेस आर देयर. ठीक है. यू कैन सी व्हाट इज रिपल इफेक्ट, what is the tone of the passage, what is the meaning of the word relentless. Vocabulary is also asked. All right, this was your passage. Again, not any significant difference than last year. जो last year आपका पेपर था more or less वही आपका सेक्शन आया है यहाँ पे भी. So GK and English similar. If we talk of logical reasoning, again not many differences, but let us analyze कि क्या आपके पेपर में आया. Logical reasoning is the biggest section in your exam. You get 70 questions from logical reasoning. Logical reasoning मतलब logical reasoning plus legal reasoning. तो अगर इसमें हम देखें तो you had 32 questions from statement based questions. Statement and assumption, statement and argument, statement and course of action, and statement and evaluating inference. I'll show you the paper in a while, पर पहले आप देखो कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस आए थे. 32 क्वेश्चंस आपके सेक्शन से थे, बट इसको पहले अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज टाइम टेकिंग. बाकी सेक्शंस को आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए. सो लेट्स सी. इसके बाद आपके आए थे कुछ अल्फाबेट क्वेश्चंस. अल्फाबेट क्वेश्चंस मतलब जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, एंड एनालॉजी. इससे आपके आए थे टोटल 4 क्वेश्चंस. लीगल रीजनिंग मैं बता चुकी हूँ. लीगल रीजनिंग से आपके 9 क्वेश्चंस थे. सिलोजिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सिलोजिज्म से यू हैड 13 क्वेश्चंस, अ वेरी इजी टॉपिक, वेरी अ टॉपिक दैट यू कैन सॉल्व इन नो टाइम. तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, तो बहुत ईजिली हर कोई सॉल्व कर सकता था और क्विकली. ओके. देन यू हैड सम क्वेश्चन फ्रॉम पजल्स. पजल से आपके 5 क्वेश्चंस थे. रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट, so you had 3 questions, yes, and then some miscellaneous questions. So ये था आपका distinction. अगर हम देखें, this was the division how questions were asked in the exam. And now let us see the paper. So if we see the paper, this is your GK section, and from here we start with your logical reasoning. So again आपके कुछ question passage based, as I've said, 32 questions. But then you had some questions related to alphabets, analogy, coding, decoding. Very quickly you can solve these questions. पूरा पैसेज पढ़ के हम सॉल्व करते हैं, उससे बहुत जल्दी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं. तो यू हैव टू अटेम्प्ट एवरीथिंग, बट यू मस्ट अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस फर्स्ट. एंड इजी थे.
Then all these questions of syllogism, सारे syllogism के questions हैं. Then some questions of law, principle and facts. Then again syllogism, all this is syllogism. Again all these questions are of syllogism. ये ranking and arrangement ही हो गए. Puzzle. Then principal facts, legal questions. And again syllogism continues. Principal fact, again syllogism. Then some again comprehension based questions. So sitting arrangement, and this is what your paper is. So I would like to conclude the class by saying that yes, I would say that yes, the paper was little bit time taking. आपका ऑब्वियसली आइलेट का पेपर होता है. अगर आपने सबसे पहले जीके सेक्शन करा, उसके बाद लॉजिकल के आपने वो क्वेश्चंस कर, जैसे सिलॉजिज्म हो गया, वर्ड के क्वेश्चंस हो गए, देन यू कुड हैव डन सम क्वेश्चंस ऑफ लीगल एंड लॉजिकल एंड देन इंग्लिश. तो यू कुड हैव मैनेज्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई विल नॉट से दैट मेनी सरप्राइजेस वर देयर. लास्ट ईयर जैसा ही पेपर था, लेवल भी सेम था, लेंथ भी उतनी थी. अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी तो चांसेस आर दैट यू मस्ट हैव डन वेरी वेल एंड आई रियली होप दैट फॉर यू. So this is it from my end for the Ailet analysis. We will be sharing the detailed answer key also soon and you can check that. Okay. We'll upload the paper along with the class. You can have a look at the paper and we will give you the answer key also shortly and you can check your answers and I hope that you get through. So that is it for today's session. Thank you.